Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will be discussing consents and its types, which is the unit 3 of medical ethics. So we will be starting with the introduction and definition of consent. Consent is defined as voluntary and free approval, permission or agreement for compliance to perform an action is known as a consent. Consent जो है voluntary, it should be under the will of the patient, patient की ख्वाहिश के मुताबिक voluntary होगा, and free approval होगा, permission होगा, अगर वो कोई परमिट करता है, अप्रूव करता है और राज़ी होता है किस मकसद के लिए, टू परफॉर्म एन एक्शन, एक्शन कोई भी हो सकता है, तो इसी को कहते हैं कॉन्सेंट. अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स, ऑटोनॉमी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रोफेशनल्स आर नो लॉन्गर और नो मोर गॉड्स and led to a significant change in the doctor-patient relationship. As we has discussed in the last lecture about autonomy, which is a basic principle of medical ethics, it's the patient right whether to deny, refuse or accept any treatment, any procedure. तो इस ऑटोनॉमी का जो राइट दिया है, बेसिक राइट है फॉर द पेशेंट, तो पेशेंट को ये हक हासिल है, ये राइट है उसका कि वो किसी ट्रीटमेंट को, किसी प्रोसीजर को रिफ्यूज़ करे या एक्सेप्ट करें. तो इसलिए पेशेंट से पहले कंसेंट लेना, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. It is the basic right of the patient to choose any treatment from all the available options. Patient को, as we had discussed in the previous lecture about the principles of medical ethics, that the doctor, the healthcare professional or healthcare providers will place all the available options in front of the patient. He will discuss all the merits, demerits, the benefits, the risks, सब कुछ वो डिस्कस करेगा विद द पेशेंट. फिर उसके बाद पेशेंट का राइट है कि वो किसी भी अवेलेबल ऑप्शन को एक्सेप्ट करें. पेशेंट्स कैन चूज एनी डॉक्टर, दे मे रिफ्यूज़ एनी ट्रीटमेंट. दिस इज़ पेशेंट राइट कि वो किस डॉक्टर से इलाज करे या ना करे, एट द पेशेंट राइट, एंड ही और शी मे रिफ्यूज़ एनी treatment. If the patient refuse any treatment, any surgical intervention, any examination, any procedure, the healthcare provider or professional cannot proceed. So what is medical consent? We will be discussing medical consent throughout the lecture. So it is the basic principle that runs all the aspects of healthcare providers. Without a valid consent, treating, managing the patient, healthcare professional will be liable under criminal laws. तो अगर पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उससे पहले पेशेंट से एक वैलिड कंसेंट, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल कि वैलिडिटी ऑफ कंसेंट कब इनवैलिड होगा, किस बंदे का कंसेंट वैलिड होगा, किसका नहीं होगा. We will discuss all in detail in the upcoming slides इंशाल्लाह. तो अगर वैलिड कंसेंट के बगैर हम कोई भी प्रोसीजर या मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट करते हैं तो क्रिमिनल लॉज का सामना करना पड़ेगा. दैट्स वाई टेकिंग a proper valid consent from the patient is very important. Patient may refuse or undergo any treatment. Consent in medical practice. In case of living patients, दो किस्म के केसेस आते हैं, या तो patient will be living or in case of dead, the patient may be dead. So when the patient is living, the proper and valid consent is taken before any medical treatment, diagnosis, management, medical procedure, interventions, organ transplant, teaching purpose, जितने भी ये सब कुछ हम करेंगे तो पेशेंट से कंसेंट लेना ज़रूरी होगा. In case of dead, अगर पेशेंट is dead, the consent for organ transplant, autopsy, record disclosure, permission is taken from the patient before his death or relatives after death. अगर कोई ट्रांसप्लांट करना है, पेशेंट अपनी डेथ से पहले कोई कंसेंट दे दे तो ये भी हो सकता है. लेकिन अगर पेशेंट की डेथ हो जाए
तो डेथ के बाद फिर हम कंसेंट लेते उसके रिलेटिव से। Components of consent. So the first component, that is detailed biodata of the patient. We will write the name, the son of, daughter of, wife of, etc. The age, sex, profession, date of admission, the disease, all the contact number, address, everything should be mentioned in the biodata of the patient. Condition or disease of the patient. कंसेंट में पेशेंट के डिजीज़ को या कंडीशन को मेंशन करना ज़रूरी होगा। इट्स अ कंपोनेंट। इन कंपोनेंट्स के अलावा द कंसेंट विल बी इनकम्प्लीट। सो कंडीशन और डिजीज़ ऑफ द पेशेंट, नेचर और पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। जो ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहा है या जो इंटरवेंशन हम कर रहे हैं उसकी पर्पस और नेचर को भी लिखना होगा। ऑल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, ये भी मेंशन करना ज़रूरी होते हैं। बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरवेंशन। जो इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं फॉर द कंडीशन ऑफ द डिजीज पेशेंट, तो उसके बेनिफिट्स, उसके फ़वाइद और उसके ख़तरात को पेशेंट के सामने रखना होगा। आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट, अगर हम कोई ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन करेंगे उसकी आउटकम क्या होगी। द लैंग्वेज शुड बी ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द पेशेंट। पेशेंट जिस लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है, द कंसेंट विल बी टेकन इन दैट लैंग्वेज। तो दीज आर द कंपोनेंट्स: बायोडाटा, कंडीशन ऑफ द पेशेंट, नेचर एंड पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट, ऑल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ द ट्रीटमेंट, आउटकम्स ऑफ द ट्रीटमेंट, टोटल कॉस्ट, द लैंग्वेज शुड बी इन इजीली अंडरस्टैंडेबल। एलिजिबिलिटी फॉर द कंसेंट। अब जो पेशेंट होगा या किस बंदे से हम कंसेंट लेंगे, कौन सा बंदा कंसेंट देने के लिए एलिजिबल होगा और उसका कंसेंट जो है वो वैलिड कंसिडर होगा। तो उसमें जो फर्स्ट थिंग दैट इज एज ऑफ द पेशेंट, 16 ईयर्स और एबव, 16 साल या 16 साल से ज़्यादा हो तो हम उस पेशेंट से कंसेंट ले सकते हैं। मेंटली साउंड पेशेंट, द पेशेंट शुड बी मेंटली साउंड, वो चीज़ को, कंसेंट को अंडरस्टैंड कर सकेगा, मैनिपुलेट कर सकेगा। सो ही शुड बी मेंटली साउंड। इफ द पेशेंट इज मेंटली इल पेशेंट, तो उनका दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंसेंट। पेशेंट कैन अंडरस्टैंड द पर्पस, बेनिफिट्स, रिस्क, अवेलेबल ऑप्शंस। ये भी एक एलिजिबिलिटी है कि जिस बंदे से हम कंसेंट ले रहे हैं, he or she should understand the purpose, the benefit and the risk of the available options. Spouse permission in case of marital relationship. अगर marital relationship है, जिस तरह अगर कोई पेशेंट है उसकी हम जिस तरह के गायनी में करते हैं, उसके फलोपियन ट्यूब्स को काटना है, तो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स कर रहे हैं तो उसमें स्पाउस से परमिशन भी लेना ज़रूरी होता है। इनवैलिडिटी, किन कंडीशन में कंसेंट विल बी नॉट वैलिड? मेंटली इल पेशेंट्स, एज वी मेंशन्ड इन द स्टार्ट, पेशेंट एज बिलो 16, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय fear or fraud, कंसेंट विच इज अगेंस्ट द बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस। तो इन 4 केसेस में, 4 कंडीशन में कंसेंट चाहिए वो इनवैलिड हो। Types of consent. So there are many different types of consent which are taken in the medical field. Different types of medical consents. The first is informed consent. It is the voluntary acceptance of the treatment or intervention by a competent patient after full understanding about it, after explanation given by the doctor about the risks and benefits of the ट्रीटमेंट। तो इन्फॉर्म कंसेंट ये है कि वॉलंटरीली द पेशेंट एक्सेप्ट करेगा किसी भी ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन को जब वो इसको अंडरस्टैंड करेगा। हाउ कैन अंडरस्टैंड? जब डॉक्टर उसे उस ट्रीटमेंट के या उस कंडीशन या डिजीज़ से रिलेटेड जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस है, अवेलेबल चॉइसेस है ऑफ ट्रीटमेंट, बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, so this is called informed consent. Patient is informed about all the benefits, the risks,
and all the available different treatment options. The second consent type of consent, that is express consent. This type of consent may be oral or it may be written, but the written consent type of consent is best and superior to oral because of the evidential value. Because orally अगर हम कोई consent लेते हैं, the patient बाद में he may deny or refuse कि मैंने consent नहीं दिया है, तो इसलिए जो written type of consent of the express consent है, it is superior. It is considered superior to oral because of evidential value. सबूत के तौर पे हम इसी consent को then प्रेजेंट कर सकते हैं टू द पेशेंट, उसके रिलेटिव्स को इन द कोर्ट्स एंड डिफरेंट उसमें लॉ में कोर्ट में हम फिर पेश कर सकते हैं. ओरल, इट इज़ प्रेजेंस ऑफ द थर्ड पार्टी विच हैज़ नो पर्सनल इंटरेस्ट. एक न्यूट्रल बंदे की प्रेजेंस में ओरली हम कंसेंट लेंगे. रिटन में इट इज़ टेकन इन रिटन फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड अनइंटरेस्टेड party. But it must be kept in your mind that in case of any procedure or the patient may refuse any treatment in procedure and investigation. तो अगर हम कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उस केस में रिटन कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है. या अगर पेशेंट रिफ्यूज़ करता है किसी ट्रीटमेंट को, किसी प्रोसीजर को और इन्वेस्टिगेशन को. अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रोक वाला पेशेंट है जिसे फालिज हुआ है, उसको आप एनजी ट्यूब डाल रहे हैं और पेशेंट कह रहा है कि नहीं मैंने एनजी ट्यूब नहीं डालनी, वो रिफ्यूज़ कर रहा है, तो उसको उससे फिर रिटन एक्सप्रेस कंसेंट लेना होगा ताकि बाद में वो आपको ब्लेम ना कर सके. Third type is implied consent. This type is implied by the patient conduct when he comes to the doctor for treatment. अब देखिए एक पेशेंट आ रहा है आपकी क्लिनिक में चेकअप के लिए, तो ही हैज़ ऑलरेडी उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो आपके पास आ रहे. तो जो रूटीन एग्जामिनेशन होते हैं, जो ट्रीटमेंट होता है, तो दिस इज़ बेसिकली अ कंसेंट. क्योंकि वो घर से उठ के आपके पास आ रहा है, तो इट मीन्स कि उसने आपकी ट्रीटमेंट को या आप जो रूटीन एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट किया हुआ है. तो इसी टाइप ऑफ कंसेंट को हम कहते हैं इम्प्लाइड कंसेंट. Tacit consent, implied consent, understood without being explained. Fifth is advance consent given by the patient before death. डेथ से पहले अगर पेशेंट कोई कंसेंट देता है, दैट इज कॉल्ड एडवांस कंसेंट. जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बंदा है बिफोर डेथ वो कहता है कि मैं डेथ के बाद आई विल ट्रांसप्लांट माई किडनीज और माई कॉर्निया या कोई भी ऑर्गन के इससे रिलेटेड, तो दिस इज कॉल्ड एडवांस कंसेंट क्योंकि बिफोर हिज डेथ उसने कंसेंट दिया है. सरोगेट कंसेंट गिवन बाय पेशेंट रिलेटिव इन केस ऑफ हिज डेथ नॉट एलिजिबल फॉर कंसेंट. तो अगर पेशेंट जो है वो कंसेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर वो मेंटली इल है या अगर उसकी एज कम है, किसी भी रीज़न की वजह से वो एलिजिबल नहीं या उसकी डेथ हो गई, तो उसी केस में हम कंसेंट लेते हैं फ्रॉम हिज रिलेटिव्स. तो दैट टाइप ऑफ कंसेंट विच इज टेकन फ्रॉम द relatives of the patient, whether when the patient is dead or he is not eligible for the consent. Proxy consent, it is given by an authorized person before or after the death. जिस तरह लोग कहते हैं प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाते ना, और एक बंदा दूसरे बंदे की जगह अटेंडेंस शीट में पी लगा देते, प्रॉक्सी जिसे कहते हैं. इसी तरह इस टाइप ऑफ कंसेंट में भी हम कंसेंट लेंगे किसी थर्ड पार्टी से. फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट के रिलेटिव्स भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो देन वी टेक कंसेंट फ्रॉम द पुलिस या डॉक्टर खुद ही कंसेंट दे देते हैं. सो थैंक यू. दैट वाज ऑल अबाउट द कंसेंट, उसकी डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी ऑफ द कंसेंट, इनवैलिडिटी ऑफ द कंसेंट एंड उसके different types. So this was all about consents and its types.